Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is the Gupta Empire and after. Learning topics: Gupta dynasty, rulers of Gupta dynasty, Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, Vikramaditya, fall of the empire, Harshvardhana, the Pallavas and the Chalukyas. The classical age of Indian culture, religion, literature, arts, architecture and science is known as the golden age of India. This age occurs between CE 320 and CE 650. The sources of information of this period are many. They range from literary, archaeological, to many secondary sources. The primary texts are regarded as the most authentic sources. This source of information also includes a special kind of inscription known as a prahasti, a Sanskrit word meaning in praise of some person or occurrence. तो हमारी जो इंडियन कल्चर में अलग अलग आपके रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस का डेवलपमेंट हुआ था वो गोल्डन पीरियड था और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज हैं जो हमें उस टाइम के इन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं. Gupta dynasty. During the post-modern period, as you have seen in the previous chapter, there arose several kingdoms in the north, Deccan and the south. Politically, this was a period of great turmoil. During the period of little more than 200 years, from around CE 320 to CE 550, there again arose an empire of a different kind. It was known as the Gupta Empire, one of the most famous empires of India. तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब नॉर्थ डेक्कन और साउथ साइड में बहुत सारे अलग अलग किंगडम स्टैब्लिश हो गए थे, उस टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी का इन्वेजन हुआ था और उन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था. Sources. The sources for Gupta period are varied. By the time of the Guptas, we have enough historical sources to get a clear idea of their working and setup. Both archaeological and literary sources inform us about the Gupta period. तो जब तक गुप्ता पीरियड स्टैब्लिश हुआ था काफी सारे सोर्सेज डेवलप हो चुके थे, इसीलिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और बाकी सारी चीजें भी राइटिंग में हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे किस तरीके का शासन था. Archaeological sources. The rock-cut temples of Ajanta, brick temples in Kanpur, Deoghar and Jhansi provide us much information about the Guptas. तो जितने भी आपके rock-cut monuments हैं, temples हैं, अजंता में है, देवघर में है, झांसी में है, वो सारे आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में या गुप्ता पीरियड के बारे में बताते हैं. Allahabad pillar inscription, also known as Prayag Prahasti, gives us a clear account of Samudragupta's conquest and his life as recorded by his court poet Harisena. तो आपका जो अलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन है वो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताता है जिस टाइम पे समुद्रगुप्त ने अपना कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया था. Coins. Coins issued by the Gupta rulers also tell us about the life in the Gupta period. Coins of gold and silver of the Gupta age have also been unearthed. A coin also depicts Samudragupta playing the veena. उस टाइम पे जो coins थे वो अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको इंफॉर्मेशन देते थे और कुछ coins ऐसे भी थे जिसमें आपके समुद्रगुप्त जिसमें वो वीणा प्ले कर रहे हैं उसका डिपिक्शन है. Literary sources. The accounts of Fa Hien, a Buddhist scholar from China, has given a vivid description of the period. Abhijanana, Shakuntalam, Raghuvansham and Meghdutam by the famous poet Kalidas were written during this age. They also provide information about the Gupta age. तो जो फा हायन थे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर चाइना से, उन्होंने भी काफी विविड डिस्क्रिप्शन दे रखा है गुप्ता पीरियड के बारे में. उसके अलावा कालिदास ने अपनी 2-3 अलग अलग किताबों में उस टाइम के सारे डेवलपमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. Rulers of Gupta dynasty. Chandragupta I. At the beginning of the 4th century CE, the Guptas established a small kingdom in Magad. The kingdom was probably founded by Sri Gupta, who ruled from CE 240 to 280 CE. तो 4th century CE के beginning में सबसे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे उन्होंने मगध में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था. Chandragupta I came to the throne in CE 320 CE. He married Kamra Devi, a princess of Lichavi tribe of Vaishali, and received Patliputra, the capital city of Magad, as a dowry.
This alliance greatly increased his power. Chandragupta extended his empire to Prayag, Allahabad. Saketa, Ayodhya was also under his control. He was the first Gupta king to be referred as Maharajidhiraj or King of किंग्स। चंद्रगुप्त वन जब थ्रोन पर आए थे तो उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करी और दहेज में उनको पाटलिपुत्र मिला, जो पाटलिपुत्र जो कि बाद में चल के मगध की कैपिटल बन गई। उसके बाद उन्होंने प्रयाग जो प्रेजेंट डे में इलाहाबाद है उस पे भी अपना किंगडम स्टैब्लिश करा था और धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन पूरे देश में धीरे धीरे करके फैलाना शुरू कर दिया था। Samudragupta. The Gupta kingdom was enlarged by Chandragupta's son and successor Samudragupta, 335 CE to 380 CE. His court poet Harisena wrote a glowing account of his military achievements. This was inscribed on a pillar at Allahabad and is known as Prayag Prashasti. Prayag is the ancient name of Allahabad. The word Prashasti means in praise of. This pillar also has an edict of Ashoka on one side. Samudragupta was not only a great warrior, he was also a wise administrator. Though he defeated many rulers, he did not absorb all the defeated states into the Gupta empire. He knew that it was very difficult to rule vast empire, so he did not overextend his kingdom. तो समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त के ही बेटे थे, जब वो शासन में आए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब डिफीट भी वो हुए या फिर जीत भी गए, जब उन्होंने बाकी सारे किंगडम्स को डिफीट कर दिया था, उन्होंने सारे के सारे एम्पायर्स अपने कंट्रोल में नहीं लिए थे क्योंकि उनको पता था कि इतने वास्ट एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। हरिसेना's accounts describe his victory over 5 kinds of kingdoms. Rulers of the Ganga Yamuna Valley or Aryavarta, that is northern India, were defeated and the present day Delhi and western Uttar Pradesh were brought under his direct administration. तो अलग अलग गंगा यमुना वैली पे आपका दिल्ली और प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश जो है वो इसी तरीके से अलग अलग किंगडम्स ने कैप्चर कर लिया था। Rulers of eastern India, including the frontier states of Assam, Nepal and Bengal, were made to accept his overlordship. They were not made a part of Gupta empire, but they became subordinates and paid him annual tributes and attended his court. नेपाल और बंगाल को भी जब इनको इन्होंने अपने एम्पायर के अंडर में लिया, उसको गुप्ता एम्पायर का पार्ट ना बना के बल्कि सबॉर्डिनेट बना दिया और यहाँ के जितने भी किंग्स या फिर जितने भी कोर्ट्स थे वो इन्हीं को रिपोर्ट करते थे। 12 rulers of the Deccan or Dakshinapath surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. The forest kingdoms situated in the Vindhya region were defeated and brought under the control of the Gupta empire. The descendants of the Kushanas and Shakas ruling in Afghanistan and the ruler of Sri Lanka also submitted to him and offered their daughters for marriage. तो डेक्कन वाले रीजन पे भी जो अलग अलग किंगडम्स थे उनको ये हरा चुके थे और हराने के बाद जितने भी किंगडम्स हार चुके थे उनको उन्होंने वापस रूल करने के लिए स्टार्ट कर दिया था। विंध्या रीजन में जितने भी फॉरेस्ट थे उनको भी इन्होंने हरा करके अपने रीजन में ले लिया था। यहां तक कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के भी जो किंगडम्स थे उनके जो किंग्स के बेटियां थी वो ऑफर करते थे कि आप इनसे शादी करिए, उसके बदले में हमें हमारा शासन दे दीजिए। If we believe in the glowing praises of Samudragupta as inscribed on the Allahabad pillar, it seems that Samudragupta never knew any defeat and because of his bravery and galore, he is often referred as the Napoleon of India. जितने भी समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे ये हमें पता चलता है कि वो कभी भी नहीं हारे थे और इसी वजह से उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Chandragupta II, Vikramaditya. He was also known as Chandragupta Vikramaditya. Being great warrior and a diplomat, he sought to increase his kingdom through matrimonial alliance. His first campaign led to the conquest of West India, Malwa, Gujarat and Saurashtra, which meant that the trade carried through the ports of Western India such as Bharuch, Cambay and Sopara could be controlled by the Guptas. Kalidas and Aryabhat were in his 9 gems. He ruled from 375 CE until 415 CE. Chandragupta Vikramaditya ये हमेशा चाहते थे कि चाहे लड़ाई से या फिर किसी भी तरह से ये अपना किंगडम एक्सपैंड करें, उसकी वजह से ट्रेड अलायंसेस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो और मैट्रिमोनियल अलायंस की बिना पर ही अपने अंपायर को और भी ज्यादा वास्ट करना चाहते थे। जो कालिदास और आर्यभट्ट थे वो इनके 9 जेम्स में से ही एक थे। Quick facts: The Navratnas or the 9 gems
adorned Chandragupta II's court poet Kalidas, grammarian Amar Simha and astronomer Varamitra were among those gems. तो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नवरत्न यानी कि 9 जेम्स थे, जिसमें कि कालिदास, वारामेरा जो कि एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनके साथ साथ आर्यभट्ट भी शामिल थे. Fall of the empire. Chandragupta II was succeeded by his son Kumargupta 415 to 467, who in turn was succeeded by his son Skandagupta 455 to 467. During the rule of Skandagupta, Gupta Empire faced the threat of the invasion by the Huns. Huns were excellent horsemen and archers, and Skandagupta and his successor found it very difficult to withstand them. Following Skandagupta's death, the empire was clearly in decline, and the later Gupta coinage indicates their loss of control over much of Western India after 467 to 469. Skandagupta was followed by Purugupta 467 to 473, Kumargupta II 473 to 476, Buddhagupta 476 to 495, Narsimgupta 495 to 530, Kumargupta III 530 to 540, Vishnugupta 540 to 550, two lesser known kings namely Vainyagupta and Bhanugupta. तो चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त ने उनका शासन लिया, जो कि काफी अच्छा चल रहा था. उसके बाद स्कंदगुप्त ने, और जैसे ही स्कंदगुप्त शासन में आए, अलग अलग लोकेशंस के जो हॉर्स राइडर्स थे, हंस थे, उनके साथ वो उनका सामना नहीं कर पाए. और उसके बाद धीरे धीरे स्कंदगुप्त की मौत के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया. बहुत सारे उसके बाद रूलर्स आए, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी सर्वाइव नहीं कर पाई. Quick facts. Huns were nomads from Central Asia who looted, terrorized and destroyed Asia and Europe from 3rd to 5th century AD. The use of the horse gave them an advantage. They could brace themselves and their horses and wired swords or shoot arrows. जो हंस थे वो सेंट्रल एशिया से आते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे हॉर्स राइडर्स थे, हंटर्स थे, अलग अलग पार्ट्स में ये लूट मचाते थे और इसी तरीके से ये नोमैडिक लाइफ लीड करते थे. Reasons of decline. Later Gupta rulers were weak, inefficient, and this could not keep kingdom under their control. Due to this, the governors of provinces revolted and broke away. The Gupta Empire became vast, and hence it became quite difficult to control it, especially when there were weak rulers on the throne. तो जैसे जैसे एंड आता गया, जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे वो इनएफिशिएंट थे, सरवाइव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अलग अलग किंगडम्स के जो किंग्स थे वो रिवोल्ट करते थे, और यही रीजन रहा उनके डिक्लाइन का. The attacks by the Hunas, a nomadic tribe from Central Asia, made the empire weak, leading to its decline. उसके बाद सेंट्रल एशिया से जो हुनास ट्राइब आई, उनकी वजह से और भी ज्यादा गुप्ता एम्पायर वीकन हो गया और डिक्लाइन हो गया. Administration. Farhine has highly praised the Gupta administration, which was mild and liberal. The Gupta age is known as the Golden Age because it had a well-organized administration. There was flourishing trade, religious tolerance, achievements in literature, science, etc. The structure of administration of the Guptas was similar to that of Mauryas. However, the modern administration was centralized, whereas during the Gupta rule, the governors of the provinces were powerful. Administration was thus decentralized. The punishments were mild, yet there were no crimes. एडमिनिस्ट्रेशन जो गुप्ता टाइम का था, फारहाइन ने अपनी बुक्स में बताया है कि इनके टाइम पे लिटरेचर एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हुई थी, अलग अलग टाइप की साइंटिफिक डेवलपमेंट भी इनके टाइम पे बहुत अच्छी थी, और इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी सबसे ज्यादा अच्छा था. Society and culture. People lived a happy, comfortable and a prosperous life. People lived in villages and led a simple and honest life. The Gupta kings were great generals. They were also patrons of art and culture. Under their protection and wise administration, the country prospered in all fields. इस टाइम पे जो सोसाइटी एंड कल्चर थी, इस टाइम के लोग काफी ज्यादा कंफर्टेबल और प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे थे, और इस डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के चलते जितनी भी कल्चर थे वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन ले पा रहे थे.
Trade. In Gupta period, trade flourished on the western coast in the port of Bharuch, Sopara and Kalyan. There was contract trade which existed with Western Asia, Africa and Arabia. From the coast of Tamra Lipti, there was trade with certain places of Southeast Asia like Kampochi, Java and Burma. As a result of the flourishing condition of trade and industry, people became rich and prosperous. तो इनके टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेड भी हुआ करता था. सेंट्रल एशिया और चाइना जैसी जगहों से थोड़ा कम ट्रेड होता था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के चलते ट्रेड एंड इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अमीर हो रहे थे और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे थे. रिलीजन. Hinduism was revived and became popular during the Gupta reign. People worshipped many gods and goddesses like Shiva, Durga, Ganesha, etc. The Gupta kings worshipped Vishnu and performed religious sacrifice or yajnas. इनके टाइम पे शिवा, विष्णु, दुर्गा माता जैसी भगवानों की पूजा होने लग गई थी और स्पेसिफिकली इन रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी के वो विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे. Art and architecture. A large number of beautiful temples with the Shikara symbol were built during the Gupta period. Early temples had a large room where the idol of God was kept. Today, these can be found in Deoghar, in Jhansi and in Sanchi near Bhopal. Temples were mostly made of bricks and stones. Beautiful fresco paintings on the wall of Ajanta caves were also made in this period by the Guptas. तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स बने थे, सुंदर सुंदर अलग अलग रॉक कट पेंटिंग्स जो आपको अजंता में आज भी देखने को मिलेगी, भोपाल के कुछ रीजन्स में देखने को मिलेगी, वो इन्हीं के टाइम पर बनाई गई थी. Harshvardhana. Harshvardhana belonged to the Pushyabhuti dynasty of Thanesar. He came to the throne in 606 CE after the death of his brother. Harsha ruled for 41 years. We find information about him from two literary works. One is Harsha Charitra, a biography of Harsha written by his court poet Banabhat. The other is the account of a Chinese Buddhist traveler, Hyo Sang, who was an honored guest of Harsha. Both Banabhat and Hyo Sang highly praised Harsha. उसके बाद हर्षवर्धन डायनेस्टी आई. सबसे पहले रूलर इसके हर्षवर्धन थे और उनके जो कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था भानभट्ट, उन्होंने अपनी किताब में इनके बारे में बताया है. और उसके साथ साथ जो ह्युआंग सांग थे जो चाइना से आए थे, उन्होंने भी हर्षा की काफी ज्यादा प्रेज करी है, काफी ज्यादा तारीफ करी है. Harsha's kingdom. Soon after ascending the throne, Harsha moved his capital from Thanesar to Kannauj as it had a better strategic location. During the 41 years that Harsha ruled, he established a strong empire which extended from Punjab, Kashmir and Nepal in the north to the river Narmada in the south. Harsha ruled from his capital at Kannauj, which was located in the rich agricultural region of the western Gangetic plain. जो हर्षा थे जैसे ही वो थ्रोन पर आए, उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी कन्नौज की तरफ, क्योंकि कन्नौज का जो एरिया था वो एग्रीकल्चर वाइज बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो फायदेमंद साबित होता. Harsha traveled frequently all over his kingdom to be accessible to his subjects. Harsha was a great patron of art. He wrote 3 plays in Sanskrit, Ratnavali, Priyadarshika and Nagananda. His court had scholars such as Bhanabhat, Subandhu and Dandin. He organized the 5th Buddhist Council at Kannauj in 641 CE. He also gave financial support to the University of Nalanda. As a result of Harsha's patronage, Nalanda prospered and became a famous सेंटर ऑफ लर्निंग. जो हर्षा थे वो आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे. उन्होंने 3 अलग अलग किताबें भी लिखी और इनके कोर्ट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्कॉलर्स भी थे, जिनमें से एक का नाम है भानभट्ट और एक का नाम है सुबंधु. उसके साथ साथ इन्होंने 5th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कन्नौज में रखवाई थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती थे, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ लर्निंग बन चुका था. Administration of Harsha. Harsha's administration was decentralized and it was similar to that of the Guptas. Local officers could take decisions. The empire was divided into provinces. The provinces were divided into districts and the districts into villages. Farmers, merchants and craftsmen had to pay taxes. The priests were given donations of land grants. Officers were also given land instead of cash salaries. Harsha का जो administration था वो बिल्कुल गुप्तास की तरह decentralized था. Local officers अपने सारे जितने भी decisions थे वो ले सकते थे.
Religion. Harsha was a follower of Shiva in his early years. Later, he became a great patron of Buddhism, but he was tolerant towards all religions. He called two great assemblies to discuss Buddhism. Buddhism के ये follower बने, लेकिन उसके साथ साथ बाकी religions की भी ये काफी ज़्यादा respect करते थे. Education and culture. During this time, Nalanda was a famous Buddhist university. According to Hyo Sang, who had also studied the university, was supported with the revenue of 100 villages. Harshavardhana followed a tolerant religious policy. In his early years, he worshipped Shiva, but later he became a great follower of Buddhism. He was also very charitable. According to Hyo Sang, Harsha built numerous stupas in the name of Buddha. He made many donations to the University of Nalanda. After organizing a great assembly at Prayag, Harsha gave huge donations and gave away everything except his personal clothing. Hyo Sang speaks very highly of Harsha. He wrote that the king was kind, courteous and helpful. तो ह्यो सांग ने भी हर्षा के बारे में यही सारी चीजें लिखी थी कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, गरीबों की ये मदद करते थे. आखिरी में आते आते तो उन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें दान कर दी थी एक्सेप्ट फॉर हिज क्लोथ्स. तो ह्यो सांग इनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं. After the death of Harsha in 647 CE, northern India was plunged into anarchy. Small regional kingdoms continued to fight with one another. Meanwhile, the Deccan in South India rose to glory. इनकी मौत के बाद छोटे छोटे किंगडम्स ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड डेक्कन और साउथ साइड में जितने भी किंगडम्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश कर रहे थे. Quick facts. Nalanda has been rightly called as one of the first few great universities of the world. It is in Bihar, located about 55 miles northeast of Patna. It was one of the first residential universities. It attached scholars and students from Korea, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persian and टर्की. तो नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे पहली कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में से एक है. बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे थे. ये बिहार में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बिहार के ही, और यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस जैसे कि कोरिया, जापान, चाइना से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. The Pallavas and the Chalukyas. The Pallavas and Chalukyas were the most outstanding ruling dynasties in South India during this period. The kingdom of the Pallavas was located at Kanchipuram, while that of the Chalukyas had been centered around the Raichur Doab, between the rivers Krishna and Tungabhadra. Aihole, the capital of the Chalukyas, was a renowned center of trade and commerce. It emerged as a religious center with a number of temples. The Pallavas and Chalukyas quite often attacked each other's land, especially the capital cities which were prosperous towns. जो Pallavas और Chalukyas थे, इसी टाइम पे साउथ साइड पे रूल कर रहे थे. इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन जो चालुक्य का कैपिटल सिटी था वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, और इसी के चलते दोनों डायनेस्टीज में काफी ज्यादा लड़ाइयां होती रहती थी. Pulkashin II. The best known Chalukya ruler was Pulkashin II. A prashasti composed by his court poet Ravi Kirti tells us about him. It tells us about his ancestors who can be traced back through 4 generations from father to son. Pulkashin evidently got the kingdom from his uncle. Ravi Kirti writes that he led expeditions along both the west and the east coasts. Further, he checked the growth of Harsha. Pulkashin even attacked the Pallava king, who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But the Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties. तो पुलकाशिन II जिनको अपनी डायनेस्टी जो मिली थी वो उनके अंकल से मिली थी. इनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने इनके बारे में हमें इन्फॉर्म किया है. अलग अलग डायनेस्टीज के रूलर्स को भी अटैक करते थे, जिसमें से कि आपके पल्लवाज एंड चालुक्याज आते हैं. एंड तक आते आते पल्लवाज एंड चालुक्याज ने अलग अलग रूलर्स को भी मौका दिया, जिनमें से कि 2 रूलर्स थे राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज. Administration of Pallavas and Chalukyas. As earlier, village was the basic unit of administration and land revenue was the main source of income. There were some new beginnings as well. The kings started taking various steps in order to get the support of persons who were powerful economically, socially, politically or militarily. इस टाइम का जो administration था वो बहुत सारे बड़े बड़े kingdoms के king से support लेता था, economically, financially और socially भी.
Many important administrative posts became hereditary. This meant that sons succeeded fathers to these posts. For example, the poet Harisena was a Mahadand Nayaka or chief judicial officer like his father. इस टाइम पे जितनी भी important posts होती थी उनको hereditary कर दिया गया था, यानी कि जो कोई father होगा उनके जाने के बाद जो उनका बेटा होता था वही post ले लिया करता था. Most important men probably had a say in local administration. These included the Naga Rashtra Sethi or chief banker or merchant of the city, the Sarthvaha or leader of the merchant caravans, the Pratham Kulika or the chief craftsman and the head of the कायस्थास और स्क्राइब्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन थे यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें से कि चीफ बैंकर, मर्चेंट्स, आपके अलग अलग क्राफ्ट्समैन भी शामिल थे. These policies were quite effective, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. इनमें से काफी सारी जो policies थी वो बहुत ज्यादा effective थी और आगे चल के इन्हीं local administration people ने अपना अपना kingdom आगे चल के establish भी किया. A new kind of army. Some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Further, the military leaders provided the king with troops whenever he needed them. The military leaders were not given regular salaries. Further, some of them received grants of land. They collected revenue from the land. This revenue was used to maintain soldiers and horses and provide equipments for warfare. These men were called samantas, which sometimes grew very powerful. They tried to become independent during the reign of the weak and inefficient rulers. इस टाइम पे जितने भी आपके रूलर्स थे वो अपनी कैवलरी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस और सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, उनको सैलरी नहीं देते थे, उसके बदले में लैंड पीस देते थे जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे. और कभी कभी जब वीक और इनएफिशिएंट रूलर्स आते थे तो ये सारे लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे वो कोशिश करते थे अपना खुद का साम्राज्य बनाने का. Assemblies in the southern kingdoms. The villages of South India were governed by many assemblies. There were 3 types of general assemblies in the world. The Ur consisted of the tax-paying residents of an ordinary village. In the Sabha, membership was restricted to the Brahmins of the village or was found exclusively in a village gifted to Brahmins. The Nagaram was found more commonly in trade centers such as cities and towns and was an organization of merchants. तो इस टाइम पे साउथ साइड के जो विलेजेस थी अलग अलग काइंड की असेंबलीज करती थी, अलग अलग क्राफ्ट्समैन काफी ज्यादा स्टैब्लिश हुए थे, यहाँ पे सभा होती थी, जो ब्राह्मण्स थे वो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर सभा को लीड करते थे. The Ur was open to all the tax-paying adults of the village, but in effect, the older members played a more prominent role, with some forming a small executive body. The Sabha functioned largely through its committees, called the Varyams. Both usually consisted smaller committees of different sizes from among their members for specialized work. तो इसमें ज्यादातर आपके सारे ही लोग होते थे जो 18 साल से ऊपर के होते थे या एडल्ट होते थे, बट यूजुअली जो थोड़े बुजुर्ग होते थे, ओल्डर पीपल हुआ करते थे, वही इनको लीड किया करते थे. Functions of the assemblies. First of all, the assemblies collected the assessed land revenue for the state or the temple. Secondly, they levied additional tax for a particular purpose, such as the construction of a water tank. Thirdly, they settled agrarian disputes like conflicts over tenures and irrigation rights. Fourthly, they maintained records of charities and taxes. The larger assemblies kept a small staff of paid officials, but most of the work was done on a voluntary basis in the smaller assemblies. तो जितनी भी assemblies थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, जो लैंड हुआ करता था उसको असेसमेंट करके उनका रेवेन्यू लिया करती थी कभी कभी, और जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स या फिर कोई भी सोसाइटी में डिस्प्यूट होते थे तो उनको वो रिजॉल्व करती थी. Life of common masses. Plays and other accounts tell us about the lives of ordinary people. Kalidas, known for his plays, depicted life in the king's court through the chosen medium. In his famous play Abhijana Shakuntalam, the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala has been depicted. अलग अलग प्लेस लिखे जाते थे. कालिदास ने भी अपनी एक फेमस किताब में, जो कि एक प्रेम कहानी के बारे में थी, शकुंतला और दुष्यंत के बीच में, उसके बारे में डिपिक्ट किया है. The Chinese pilgrim
Fa Hien also wrote the plight of those treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. Fa Hien ने भी अपनी किताब में उस टाइम के अनटचेबल्स के बारे में लिखा है और बताया है कि ऐसे जो गरीब लोग हुआ करते थे, अमीर लोग उनको सप्रेस किया करते थे और उनको सिटी के बाहर ही रहना पड़ता था. Recap. Sri Gupta founded the Gupta dynasty. However, the first great ruler of the dynasty was Chandragupta I. Samudragupta ruled over large parts of India. The Allahabad pillar inscription Prayag Prashasti lists his conquests. Chandragupta II, called Vikram Aditya, defeated the Shakas. The Navratna in his court included the great poet Kalidas. Fa Hien also visited India during his reign. Harshavardhana ruled over North India with his capital at Kannauj. There were local assemblies for local administration which included Ur, Sabha and Nagaram. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से श्री गुप्त ने फाउंड किया था, लेकिन पहले रूलर उसके चंद्रगुप्त थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, स्कंदगुप्त के बाद डिक्लाइन हो गया, फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूलर्स ने शासन किया. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको खुद से करनी है.